नमस्कार। राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा टीम परामर्शदात्री कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सर्वप्रथम हम कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं दीप प्रज्वलन के साथ। माननीय मंत्रीवर से अनुरोध है एवं सभी गणमान्य अतिथियों से भी हमारा अनुरोध है कि वे कृपया दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यशाला का उद्घाटन करें। Namaskar and welcome to consultative workshop on National Emergency Medical Teams Initiative. This morning, we welcome in our midst Dr. Mansukh Mandaviya, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India. We extend a very warm welcome to the honorable dignitaries who have taken their seats on the dais. Learnings from the pandemic must form the agenda for our preparedness and response together. We need to diversify our capabilities and ensure that collectively we preserve ourselves in the face of any health crisis. इस राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा टीम परामर्शदात्री कार्यशाला में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम हम शुभारंभ करने जा रहे हैं पौधों की भेंट के साथ सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे जो हमारे बीच मंच पर आसीन है। हम हार्दिक अभिनंदन से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी का। May I request Shri Love Agarwal, Additional Secretary, to kindly present a plant as a token of welcome to the Honorable Minister, and please welcome him. We warmly welcome in our midst Shri Rajesh Bhushan, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. May I request Dr. Pradeep Khasnobis, DDG DM Cell, Ministry of Health and Family Welfare, to please present a plant to the honorable dignitary and welcome him. May I now request Dr. Yogesh, Chief Medical Officer, DM Cell, Ministry of Health and Family Welfare, to please present a plant to Shri Love Agarwal, Additional Secretary, Public Health, Ministry of Health and Family Welfare, and welcome him. We warmly welcome in our midst Dr. Atul Goyal, Director General Health Services. May I request Dr. Akanksha Khurana, Senior Medical Officer, DM Cell, Ministry of Health and Family Welfare, to please present a plant to the honorable dignitary and welcome him. We warmly welcome in our midst Dr. Rodrigo H. Offrin, WHO representative to India. May I request Dr. Saurav Dalal, EMT Focal Point WHO India, to kindly present a plant to the honorable dignitary and please welcome him.
After extending a green welcome as an ode to Mother Earth, we take this program forward. We begin with the welcome address of Sri Love Agarwal, Additional Secretary, Public Health. May I request you all to please welcome him with a round of applause. I extend a hearty and warm welcome to Honorable Health Minister, sir, for gracing this occasion with his presence. I also extend my heartiest welcome to Secretary Health, sir, and other colleagues from Ministry of Health, DGHS Sahab, WHO, our colleagues from WHO headquarters, CRO office, as well as our senior colleagues, Director AIMS, Director NIMHANS, our representative from Armed Forces, Ministry of Home. Most importantly, our colleagues from states who are our major partners in terms of taking this initiative forward. Sir, we acknowledge the presence of 13 principal secretaries, Secretary Health, and also MD/NHS from 13 states. This has been very widely represented by states across the country, sir. As it has been famously said, that by failing to prepare, you are preparing to fail. Preparedness against public health emergencies and disasters is an unending process requiring continuous feedback in terms of gap assessment and initiatives directed towards filling up of those gaps while building on the available strengths. Honorable Minister, sir, senior officers, over the course of pandemic, we have seen that the core capacity required to prepare and mitigate the impact of any public health emergencies remain largely the same. One of such core capacities is provision for such capacity in terms of health facilities, trained healthcare workforce, and logistics. The proposed National Emergency Medical Team Initiative plans to revamp the traditional response mode of healthcare manpower deployment in disasters and public health emergencies. Such manpower deployment to be effective has to be formally trained and equipped not only in terms of clinical skills, but also in terms of on-field coordination with other stakeholders on field. Sir, this workshop, which you had kindly consented to inaugurate, during the course of these next 2 days, we plan to work on 4 crucial aspects relevant to emergency medical teams. These include focus on what systems have to be put in place, what type of manpower planning has to be done in terms of ensuring that we are able to have teams properly equipped, what supplies they need to have so that they can actually make a meaningful intervention at the field level, and equally important, what structures have to be put in place that these teams which are then sent to the field are able to do the purpose required out of them. So there is a need that we bring convergence in various initiatives directed towards disaster preparedness and response by all the stakeholders, both in central and state government. And this workshop will primarily try to serve that purpose, sir. With these welcome remarks, I once again welcome Honorable Minister, Secretary Health, and all other colleagues for this workshop. Thank you very much. Thank you, sir, for setting the right tone to this morning's proceedings. Ladies and gentlemen, we have with us this morning Dr. Rodrigo H. Offren, WHO representative to India. May I now request Dr. Offren to kindly articulate his thoughts. Please put your hands together and give a warm welcome. Dr. Mansukh Mandaviya, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Shri Rajesh Bhushan, Secretary Health, Additional Secretary Love Agarwal, of course, Professor Atul Goel, DGHS, distinguished representatives from Government of India, different institutes, state governments, including Principal Secretaries of Health, Mission Directors, NHM, officials from NDMA, from NDRF, directors of medical institutions and other public health agencies, my colleagues from WHO, we are here from 3 levels today, guests, ladies and gentlemen. It is my privilege to be here with you today. It is a dream of mine when I was in the regional office to have seen India come together for the National Emergency Medical Team Initiative. So the day has come. At the outset, I would like to congratulate the Minister of Health Family Welfare for this
well-timed consultation, learnings from COVID under the leadership of Dr. Mandaviya and his team at the MOHFW. This initiative will serve as a blueprint. It is the first step, but a big step, a detailed step for a strong architecture for health emergency response for India. Our world is vulnerable to a range of both natural and man-made emergencies, all of which are not mutually exclusive. We've seen that through COVID. We had COVID, there will be a monsoon, there will be a cyclone. It's something that countries need to prepare for, as mentioned. Countries around the world need to build and strengthen capacity for emergency medical care, and developing a cadre of trained and well-equipped NEMTs with an established framework for response is essential. A rapidly deployable health emergency team, well-equipped to respond swiftly and effectively to emergencies, leveraging national and subnational capacities, is a need of the hour. The recent experience with COVID has demonstrated that natural disasters or emergencies cannot be effectively managed through routine health service delivery systems and warrant a surge for that response. EMTs enhance that capacity of national health systems in leading the activation and coordination of rapid response capacities in the immediate aftermath of disasters, outbreaks, or even other emergencies. The next 2 days, as mentioned, will focus on key aspects of what a national emergency medical team system needs to be in place. Systems and strategies, staff and minimum standards, supplies and equipment, and structure and space. Where will you work? A team needs to be self-sufficient when it arrives wherever they are. But that concept can be further adapted within India. How do states help each other? What are the triggers for activation, for deployment? Where is the sustainable funding for this to keep happening? Because the investments for health are already huge. And this is another extra, we don't want it to be a one-off initiative. Those are things that will be discussed today. What are the policies to train staff? Who will be qualified to be trained? Where is the continuous business improvement and training and delivery of services? More importantly, the idea of connecting. Each of those 4 areas needs to connect with each other. Systems and policies, staff and minimum standards, supplies and equipment need to connect with each other. The different teams in all over the country. In fact, it is great that the different teams from uniformed services, from NDMA, from medical colleges can come together so that there is a solid, coordinated, consolidated response. As we all move to operationalize this vision, our commitment to support government of India for this initiative, WHO in all its 3 levels, continues and remains strong. This workshop will lay the foundation to build an emergency response system, fostering seamless collaboration with all key actors and networks across national and subnational levels. We really look forward to this. I and my colleagues are really looking forward to this and working with the Ministry of Health and Family Welfare for this initiative. As chair of the G20 presidency, India aims to consolidate and converge ongoing different types of initiatives for emergency response. And not just response, but also preparedness and readiness. And this, I think, is a great example for the world to look at. My best wishes for a successful deliberations, and many thanks. Thank you, Dr. Ofren, for your presence here today and for being a part of this initiative. Ladies and gentlemen, we warmly welcome in our midst this morning, Director General Health Services, Professor Dr. Atul Goyal. May I now request him to address the audience. Please put your hands together and give a warm welcome. A very good morning to all of you. Honorable Health Minister Dr. Mansukh Mandaviya ji, Secretary Health, my colleagues from the Ministry, health administrators from around the country,
and my fellow doctor colleagues. Well, health emergency team is a good initiative floated from the Government of India towards management of emergencies and response to disasters. But it must be kept in mind that this should not become a single vertical. It should work in coordination with other agencies which are already in place, for example, disaster management. Plus, it also needs to be coordinated with the places where the emergencies are likely to arise, which means people on the field, public, which is likely to be the first responder in any emergencies. So these emergency teams would actually be incomplete without involving the people who are likely to be affected immediately by the emergencies which are going to arise in the periphery. For which I guess simply workshops probably done at this place may not be enough. We'll need to visit the centers, the periphery, and actually find out the conditions, the needs of those areas. India is a country which is very different in terrains. You have Northeast on the one side, you have Himalayas on the other side. So you need to have different terrains, and response has to be local. It cannot be always from the center. So this coordination will be absolutely essential to have an adequate response as far as disaster management or emergency is going to be there. I wish you have a successful workshop and we come out with certain things which are actually deliverable. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, as we have already heard from the Additional Secretary earlier, we have the states present here in full strength, and today we are thankful for your presence here today. We have in our midst Shri Parthasarathi Sen Sharma, Principal Secretary Health, Uttar Pradesh. May I now invite him on stage to kindly share their perspective from the states. Please welcome with a round of applause. Honorable Union Minister for Health, dignitaries on the stage, my friends and colleagues from across the ministries of Government of India from the states. First of all, I take this opportunity to compliment Government of India and WHO for taking this much needed and topical initiatives towards emergency medical response preparedness by having this consultative workshop on NEMTS. As we all know, both health and disaster are actually state subjects in the Constitution, and under the National Disaster Plan also for the public health emergency response, the nodal department is actually state health ministries. So it stands to logic that without the full support and cooperation of the states, this initiative cannot be meaningful. Here on this occasion, I reiterate the full cooperation and full support of the government of Uttar Pradesh in this important initiative, sir. On this occasion, I just want to point out my one response is the example that comes to my mind, on the top of my mind, is the election response. In elections, we create election teams of people who are otherwise doing their job, train them, constitute teams, and then deploy at a very short notice. In case of emergencies, we will require even less time. So the first step can be probably to have a database of such cadres available in the field who, with their specialization. Once we know what kind of specialization we require for different kind of emergencies, and that database then can be trained beforehand so that when such an emergency happens, immediately with today's telecommunication and internet, we can form these teams and deploy in the field, because as we all know, the response time will be crucial in such kind of emergencies, in most of the emergencies. I would also say that here, sir, Rajesh Bhushan sir is there, Love Agarwal is there. The kingpin or the linchpin of disaster management still in the field will be district magistrate. So we will have to take that institution into account and take that institution to confidence when we make these emergency response teams. Thank you so much. I once again compliment you and my best wishes for a successful workshop. Thank you, sir, for your presence here today and being a part of this initiative. Ladies and gentlemen, we have with us today Secretary Health and Family Welfare, Shri Rajesh Bhushan. May I now invite him to deliver the keynote address. Please put your hands together and give a warm welcome. Honorable Union Minister for Health, Family Welfare, Chemical and Fertilizers, Government of India,
Dr. Mansukh Mandaviya ji, my colleagues in the ministry, Shri Love Agarwal, Additional Secretary, and Dr. Goel, Director General Health Services, WR India Rodrigo Offren, ladies and gentlemen. Sir, when we gather here and are in the midst of starting a productive and mutually fruitful discussion on emergency medical teams initiative, we must not forget that there are already multiple building blocks of this initiative which are in place. As is the problem or challenge in all other areas of health, nationally and globally, the architecture presently is fragmented and it is scattered across multiple agencies, multiple departments, multiple stakeholders. So the initiative today should focus on bringing it all together. Sir, मैं इसको थोड़ा और explain करके बताना चाहूँगा. Based on my experience of working for decades in Bihar, whenever the Kosi flooded, sir, which it does almost with alarming regularity every year, and causes huge amount of devastation in North Bihar and in parts of Nepal, it was always the armed forces who rushed in to assist the civilian administration. So one major building block of emergency health or medical response are our armed forces. And they have always been there working on a standard SOP. How do we work in synergy with them? पार्था ने अभी बोला कि इसका फलक्रम जिले का कलेक्टर होता है. Obviously, it is the collector who calls the army and who decides when to take that call. And the entire state administration then supports the collector in this response. So therefore, this is one building block, sir, which is available. The other building block came up in 2005 when we had the Disaster Management Act. हमारे देश ने 2005 में एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया. उसके तहत 2019 में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बने. And these plans were made nationally as well as in each state and in each district. How are these plans tying up with this initiative? So that is another building block which is already in place. We need to, bring them together, converge them, so that the value addition of synergy helps us as we proceed ahead. The third most important building block is this huge network of trauma centers which have come up in the last 6 years in this country under a centrally sponsored program. 60, 40, 90, 10, 60%, 90% is the financial resources that are contributed by Government of India, and 40% and 10% in case of northeastern states and Himalayan states are contributed by the states. And these trauma centers are not standalone trauma centers. They are networked with a medical college hospital or with the AIMS as a mentor institute. So there is a trauma center, there's a mentor institute. Let's take example of UP. The trauma center in Chandauli has Banaras Hindu University's medical college hospital as its mentor institute. So this is another building block which, needs to come together in this initiative. Sir, I would also draw your attention to the fact that internationally, sir, there is, what do we call it, the Blue Book. There is what is popularly called the Blue Book, which is the standard global template for response. How would different agencies act when a medical emergency or a medical disaster or a pandemic strikes? So one of the aims, sir, of this workshop would be that eventually we would have a national template, something that can be loosely called India's Blue Book or its counterpart. And we would then need to have these regional workshops with groupings of state governments where they are also brought on board, because as Partha pointed out, in the constitutional scheme of things, this is the mandate of the state government.
However, the union government is there to provide technical and financial support wherever the state's efforts are to be supplemented. तो ये एक बड़ा परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रखना चाहता था, because all of you who are sitting here, I see various EDs of AIMS, they bring to the table their own in-house skill set. I see colleagues from armed forces here, they bring to the table their own skill set. And I see a lot of other academic institutions, international institutions who are here. How do we, I see people from NCDC, and AIMS New Delhi. So how do we bring all these things together in a harmonious national architecture, which will ensure that these emergency medical teams, which cut across disciplines, cut across institutions, are not only formed, trained, but are mobilized at the shortest possible notice. And I hope that we will be able to achieve this target at the end of the day when we conclude our deliberations and then lay a clear roadmap for the progress ahead. I wish all of you well, and I thank the Honorable Minister for taking time out from his extremely busy schedule to address us and to guide us in our efforts. Thank you. धन्यवाद माननीय सचिव महोदय, भविष्य के इस परिप्रेक्ष्य को सभा के साथ साझा करने के लिए। Ladies and gentlemen, as a nation which is prone to disasters, we are committed to build a world-class emergency medical response system. May I now request Dr. Mansukh Mandaviya, the Honorable Union Minister of Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, to launch this initiative. माननीय मंत्रीवर से अनुरोध है कि वे अपने कार्यक्रमों द्वारा इस इनिशिएटिव का अनावरण करें। इस उपलब्धि के लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। Ladies and gentlemen, we are honored to have in our midst this morning the Honorable Minister, Dr. Mansukh Mandaviya. Health, emergencies, prevention, preparedness, and responsiveness is one of the priority areas of the health track of India's G20 presidency, and the Honorable Minister's guidance is pivotal in achieving these goals. Please put your hands together as I request him to articulate his thoughts. नेशनल इमरजेंसी मेडिकल टीम की 2 दिन की कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे सेक्रेटरी राजेश भूषण जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी लव अग्रवाल जी, अतुल गोयल जी, WHO के प्रतिनिधि रॉड्रिक्स जी, सभी उपस्थित सभी राज्य से आए हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और एम्स के हमारे कई डायरेक्टर भी दिख रहे हैं, सभी अलग अलग विभाग से उपस्थित अधिकारीगण। जब मुझे बताया गया कि NEMT की कार्यशाला है और हम मेडिकल इमरजेंसी के लिए टीम को ट्रेन करने के लिए एक कार्य योजना बनाई है, मुझे अच्छा लगा क्योंकि जो देश में इमरजेंसी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये हमने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा भी, दुनिया ने भी देखा। मैं कल सुबह
लौटा हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया के सभी कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, पॉलिटिकल विल भी वहां पर होती है और इंटेलेक्चुअल लोग भी वहां पर होते हैं। यहां मैंने देखा आज भी कोविड मैनेजमेंट, G20, इंडिया की इमर्जिंग इकोनॉमी, ये आज इंटरनेशनल फोरम में टॉकिंग पॉइंट है। ऐसी स्थिति में जब लव मेरे पास डिटेल लेके आया कि हम कैसे ट्रेन करेंगे और हमारे सारे देश में इमरजेंसी के लिए शायद 40 टीम्स हम बनाएंगे और एक टीम में 10-15 लोग को तैयार करेंगे ताकि देश में कोई ऐसी नेशनल इमरजेंसी मेडिकल के लिए आ जाए तो हम उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर सके। इट इज वन पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैंने उसको कहा था कि ये तो बहुत बड़ा देश है, उसमें केवल आप 40 टीम्स बनाएंगे तो मैं मानता हूं कि कम होगी। आपको ऐसी मिनिमम 100 टीम देश में बनानी होगी। और ये भी मेरा नेचर है कि सरकार में अनाउंसमेंट होके होता है, चलता है, ऐसी स्थिति मोदी गवर्नमेंट में तो है नहीं। तो मैंने उस वक्त डायरेक्शन दिया था कि आपको 100 टीम बनानी होगी और ये ट्रेनिंग आपको मैक्सिमम 3 महीने में पूरी करनी होगी। ये जो आप कर पाएंगे तो मैं मानता हूं कि आप सब लोगों के लिए, देश के लिए उपयोगी भी होगी और आपकी सक्सेसर भी होगी। दूसरा, ट्रेनिंग हम कैसे करें? यहां एसओपी की बात हो रही थी। दोस्तों, एसओपी से काम करने से क्या नतीजा निकलता है और बियॉन्ड ऑफ एसओपी, एसओपी हमारी कैसी होनी चाहिए, कैसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और फ्लेक्सिबल एसओपी, एसओपी मींस एसओपी, एसओपी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती है। पहले क्वेश्चन आपके मन में भी आना होगा, लेकिन भी हो हमारी ट्रेडिशनल व्यवस्था हमें इमरजेंसी में कैसे उपयोगी हो सकती है और साइंटिफिक व्यवस्था हमें इमरजेंसी में कैसे उपयोगी हो सकती है, दोनों को ध्यान में रखते हुए आपका ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल, दुनिया की हर बार एक माइंड से निकाल देना है। हर देश का हेल्थ रिस्पॉन्स के लिए अलग अलग मॉडल हो सकता है। दुनिया का अपना मॉडल है, हर कंट्री का अपना मॉडल है, इंडिया का अपना मॉडल होना चाहिए। हमारे यहाँ अलग स्थिति है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे निकले हैं और कोई एक्सीडेंट हो गया और यूरोप है तो वहां एसओपी को फॉलो करेंगे। कोई व्यक्ति आया, हाँ वहां एक्सीडेंट देखा, देखेंगे, वहां खड़ा रहा, वहां से 103 जो भी उसका टोल फ्री नंबर है वहां लगाएंगे। वहां से जब रिस्पॉन्स आएगा तब तक वो एक्सीडेंट में जो लोग पड़ा है वहां से उसको उठाएंगे नहीं, वहां पड़ा रहे। ये एसओपी फॉलो करेंगे। और हमारे एसओपी यहाँ क्या है, कोई भी हो, ये अफसर हो, सामान्य नागरिक हो, डॉक्टर्स हो, कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई जगह पे एक्सीडेंट हुआ है और वहां से पास हुआ, तुरंत गाड़ी खड़ी रखेंगे, उसको गाड़ी में बिठाएंगे, गाड़ी में बिठा के पूछेंगे नहीं कौन है तू, और सीधा उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। हमारी हॉस्पिटल उसको ऐसा नहीं पूछेंगे कि तेरा इंश्योरेंस है नहीं है, कहाँ है, तेरी आइडेंटिटी पहले दे, ऐसा नहीं। पहले उसकी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी और बाद में पता लगेगा कि ये व्यक्ति वो XYZ है और उसके फैमिली मेंबर को तो बहुत समय के बाद पता चलेगा। दोस्तों, ये हमारा मॉडल है। जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तब कई एसओपी होती है, कई बियॉन्ड ऑफ एसओपी बिहेवियर करना होता है। क्या ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट बन सकता है? दूसरा, एक ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर, ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट बन सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, कोई जगह पे एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, या तो कोई जगह पे बाढ़ आ गई,
तो ऐसी स्थिति में हम कई बार न्यूज पढ़ते हैं और न्यूज में लिखा होता है कि लूटपाट चली, डेड बॉडी से उसके पर कोई ज्वेलरी है तो निकाला गया, ये किया गया, वॉच है तो निकाला गया। उस वक्त जब वहां के लोकल लोग, कई लोग मदद की भावना से आते हैं, कई लोग बद इरादा से आते हैं, क्या हम रिस्पांस टीम आके पहले पब्लिक को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे, प्रशिक्षित करने की कोशिश करेंगे? फर्स्ट काम हमारा एक, हम तो केवल 15 लोग पहुंचे होंगे, लेकिन वहां नजदीक में जो सोसाइटी है, उसके नजदीक रहने वाले लोग हैं, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसको क्या करना है। तो आपको कितना वर्क फोर्स मिल जाएगा, आप ट्रेन है, आप उसको इनफॉर्मली ट्रेन कर दीजिए। जरूरत नहीं है कि आपको उसको क्लास में बिठा के, एक बहुत बड़ा ऐसी कोई घटना हुई है तो वहां 200-500 लोग आ गए होंगे देखने के लिए, हम उसको खड़े होके बोल के, माइक से बोल के बता दें कि आपको ये करना है, इस तरह से करने से हम मददरूप हो सकते हैं। इस टाइप के बियॉन्ड ऑफ एसओपी बिहेवियर होता है। और हर इंसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल, यहां हमारे पार्था ने बात कही कि इलेक्शन में हमें शॉर्ट टाइम में व्यवस्था खड़ी करते हैं, लेकिन वो अपेक्षित होता है क्योंकि इलेक्शन की डेट तय होती है और इलेक्शन तब ही होना है। तो उसकी तैयारी में एक टाइप का एसओपी होगी, लेकिन जब कोई इंसिडेंट होता है वो तो बिना सडन होता है, बिना कहे नहीं होता है, वो टाइम पे। हाँ, एक हो सकता है, कई, फॉर एग्जाम्पल बाढ़ कब आती है, तो कि बारिश की सीजन में आती है, तो वो तय होता है कि भाई बारिश की सीजन में बाढ़ आने की संभावना होती है। लेकिन सुनामी आना है तो कोई तय नहीं होता है, क्यों, तो फुल मून डेज के दिन पर आएगा, उस दिन पे आएगा, ऐसा तो नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? मैं मानता हूं कि मॉड्यूल मेरी समझ है तब तक एसओपी वाला मॉड्यूल ही चलता है। और मैंने ये मॉड्यूल पर काम करने से दुनिया ने कोविड क्राइसिस में अपना इमरजेंसी मॉड्यूल पर काम किया और हमने हमारा इंडिया का इनफॉर्मल इमरजेंसी मॉड्यूल पर काम किया। तो कौन सा मॉड्यूल कारगर रहा? उसमें भी जनता का प्रशिक्षण, मोदी जी ने बहुत बड़ा जनता का एक प्रशिक्षण ही किया था, बार बार राष्ट्र को संबोधित करके, छोटी छोटी बात बोल के, स्लोगन छोटा छोटा दे के, गमसा लगाने की बात करके, कितना बड़ा एक गमसा लगा देना, कितना बड़ा मास्क का रिप्लेसमेंट हो गया। इतना मास्क हमें इमरजेंसी में नहीं मिलता, लोग गमसा लगा के घूमते थे। ये हमारा इनफॉर्मल मॉडल है। इस तरह से कोविड मैनेजमेंट के दरमियान मैंने ऐसा कई डिसीजन मोदी जी ने करते हुए, हमें गाइड करते हुए देखा। उसका इम्प्लीमेंटेशन देखो, भावात्मक, ये हमारा मॉडल है भाई। दुनिया में डॉक्टर्स, उस वक्त मेरी हर दिन मीटिंग होती थी दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर के साथ, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो कई कंट्री मुझे बताते थे कि एक्सलेंसी मिनिस्टर, हमारे यहाँ डॉक्टर 50% छुट्टी पे है, वो नहीं आते हैं, नर्सिस ड्यूटी पर नहीं आती है। हमें उसके पर उसका जो कानून, हर कंट्री में अलग अलग कानून का उपयोग करते हुए उसको कंपलसरी आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भी नहीं हो रहा। हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सब हमारे डॉक्टर्स ने अपने जीवन को जोखिम में रखते हुए भी अपनी ड्यूटी निभाई। वो क्या था? इट्स वन टाइप ऑफ इंडियन मॉडल। ये हमारा मॉडल है। ये मॉडल का हम अध्ययन कर सकते हैं क्या?
हम हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए जब तैयारी करें, तब इस टाइप का मॉडल को ध्यान में रखते हुए दुनिया में अपने देश के नागरिक को एजुकेट करने की एक सिस्टम होगी, हमारी दूसरी सिस्टम है। हमारे यहाँ किसी को पढ़ाने बैठने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसलिए मेरा आग्रह है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। मोदी जी ने लास्ट वीक में अच्छा अनाउंसमेंट किया कि हमने वैक्सीन मैत्री की थी, वैसे हम आरोग्य मैत्री कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि उसका भी अध्ययन करके एक बार आरोग्य मैत्री की तहत दुनिया में कोई भी जगह पे, चाहे युद्ध की स्थिति हो, चाहे कोई भी डिजास्टर हो, उस वक्त हमारी जिम्मेवारी है कि उसको मेडिसिन उपलब्ध कराना। उसको मेडिसिन उपलब्ध हो जानी चाहिए, बिना मेडिसिन से वहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उसको कैसे मदद करें? उसको मदद करने के लिए हमारी तैयारी यहाँ क्या होनी चाहिए? इमीडिएट, तुरंत ही मैसेज होने के बाद तुरंत ही पहली टीम, फॉर एग्जांपल कई कंट्री में, नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था, तब सबसे पहले इंडिया की ओर से उसको सर्विस सेवा उपलब्ध कराई गई थी। अफगानिस्तान में भी इंडिया ने सबसे पहले सेवा उपलब्ध कराई थी। हम करा सकते हैं। वो कौन सा मॉडल था, किस तरह से हमने काम किया था, बेस्ट प्रैक्टिस हमारी ही, मैं ऐसा कहता, मेरा ऐसा सुझाव है, बाकी दुनिया में जो भी बेस्ट है हमें लेना चाहिए, उसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। अच्छा जहां भी है वहां से सीखना चाहिए, लेकिन जो उसका कैरिकुलम तैयार करते हैं, ये टीम को मेरा सुझाव है कि हमारे यहाँ पिछले 20 साल में, 25 साल में जो डिजास्टर हुआ है, उसकी कई बेस्ट प्रैक्टिस है हमारे पास। ए बेस्ट प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल गुजरात में 2000 में बहुत बड़ा फ्लड, सुनामी जैसा हुआ था, साइक्लोन हुआ था। उस वक्त सारा कच्छ और जामनगर, 2 डिस्ट्रिक्ट तबाह हो गए। कैसे उसको ठीक किया था, उस वक्त कैसी व्यवस्था का उपयोग किया था? ऐसे बेस्ट प्रैक्टिस हमारे देश में ही आपके पास इतनी उपलब्ध होगी। दुनिया की प्रैक्टिस का स्टडी करो, लेकिन वो दूसरी प्रैक्टिस होगी। इंडिया की प्रैक्टिस ये इंडिया की होगी। उसका डिटेल अध्ययन करके हमारा कैरिकुलम बनना चाहिए, ताकि वो सही मायने में, मैंने देखा है कई लोग और कई व्यवस्था में हमने एक मॉडल बना लिया और जो यूनिवर्सल उसका यूज होता हो, और उसका इंप्लीमेंटेशन समय आए तब हम करने गए, तुम जितना रिस्पॉन्स कर हमारी अपेक्षा थी इतना नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में ऐसा मॉडल का भी हमें स्टडी करना चाहिए, और उसमें क्या बदल करके हमारे मॉडल में हम कन्वर्ट करें, उसमें अच्छी क्या चीजें हम ले लें। इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग व्यवस्था हमारे यहाँ जो खड़ी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि नेशनल इमरजेंसी में हम हेल्थ की दृष्टि से एक अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे। मेरी बहुत एक टीम से उम्मीद है। दुनिया, हमारा मॉडल, समय बदला है दोस्तों। आज तक हम ही दुनिया का मॉडल की स्टडी करते थे, अभी दुनिया रेडी है इंडिया के कोई भी मॉडल का की स्टडी करे। पहले तो ऐसा ही माइंडसेट था दुनिया का भी और हमारा भी, कि दुनिया में है वही अच्छा है, और दुनिया को भी ऐसा था कि भारत के पास तो अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी पिछले 5 to 7 ईयर्स से ग्लोबल सिनेरियो बदल रहा है। आप मान सकते हो, इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक स्पेशल सेशन था, जिस सेशन में 50 से अधिक सीईओ थे। इंडिया इमर्जिंग, और उसके ऊपर डिबेट चल रही थी दुनिया के सीईओ इकट्ठा कर होके, कि भाई इंडिया इमर्ज हो रहा है, चलो स्टडी करें।
कैसे इमर्ज हो रहा है, तो उसके ऊपर डिबेट चल रही थी। आज तक हमारे सीईओ दुनिया की कंट्री की इमर्जिंग इकोनॉमी की स्टडी करते थे, या तो उसकी इज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्टडी करते थे, या तो उनका अदर टाइप के मॉडल की स्टडी करते थे। अभी दुनिया हमारी स्टडी करने लगी है, इसलिए ये सही अवसर है कि हम हमारी व्यवस्था को भी स्ट्रॉन्ग करें और दुनिया को भी मदद करें। और इंडिया का दूसरा भी एक नेचर रहा है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी पर काम करने वाले लोग हैं, और हेल्थ ये हमारे लिए कभी कॉमर्स नहीं है। दुनिया के लिए कॉमर्स हो सकता है, हेल्थ हमारे लिए सेवा है, और यही व्यवहार दुनिया के साथ समय समय पर हमारा रहा है। कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने हेल्थ को कॉमर्स नहीं देखा, दुनिया को मेडिसिन की जरूरत थी, हिंदुस्तान ने मेडिसिन उपलब्ध कराई। लेकिन जो कॉमर्स देखा होता तो उस समय ऐसा था, उस वक्त तो दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, हम चाहे इतना पैसा ले सकते थे, दुनिया की जरूरत थी वो तो लेते ही लेते। लेकिन इंडिया ने 150 कंट्री में मेडिसिन पहुंचाई, लेकिन प्राइस हाइक नहीं किया और क्वालिटी में बार्गेनिंग नहीं किया। हमने भी कोविड के दरमियान कई कंट्री से कई चीजें मंगाई थी और हमें वापस भेजनी पड़ी, क्योंकि हमें क्वालिटी माल नहीं मिला था। तो हेल्थ को जिस दृष्टि से हमने देखा है और हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये स्ट्रेंथ का एक पार्ट हमारे फोर्स बन सकती है, इमरजेंसी फोर्स बन सकती है, और वो हमारे देश की रिक्वायरमेंट भी पूरी करे और दुनिया को भी हम मददरूप हो सकते हैं। इस दृष्टि से ये 2 दिन में आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए। मैं मानता हूं कि पहली कॉन्फ्रेंस होगी, पहली है ना लो, एक कार्यशाला पहली होगी, नेशनल लेवल पर पहली होगी। बाद में फिर से इस टाइप का वर्कशॉप आपको करना पड़ेगा ताकि उसकी कंटिन्यूटी भी रहे, और आपकी जो अपेक्षा है इस तरह के एक टीम फोर्स भी तैयार हो, और एक टीम फोर्स तैयार होने के बाद कोई ऐसी इंसिडेंट वाली घटना में हम उसका अच्छा आउटपुट देखें और बाद में हम दुनिया को भी मदद करें। ये मेरे मन में भावना थी, इसलिए मैंने तय किया था कि मैं इस कार्यक्रम में अवश्य जाऊंगा। ऐसी कई वर्कशॉप होती रहती है, और भूतकाल में भी नॉट ओनली फॉर हेल्थ बट ऑल टाइप ऑफ सेक्टर में ऐसा वर्कशॉप होता है, 2 दिन हो जाता है, खत्म हो जाता है, चले जाते हैं। मैं आउटपुट का आग्रही व्यक्ति हूं, मेरी अपेक्षा है कि ये वर्कशॉप से जो आउटपुट निकलेगा वो कई देश के नागरिकों के जीवन बचाने के लिए उपयोगी होगा और दुनिया को मदद करने के लिए ही भी उपयोगी होगा। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्रीवर कि आज आप यहाँ पधारे और अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन किया, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि स्वास्थ्य रणबांकुरे आपकी और देश की हर पराकाष्ठा पर पूरे उतरेंगे। देवी और सज्जनों, कार्यक्रम का समापन करने जा रहे हैं।